Good morning and welcome back to another vlog and it's a second day at Hampi. টায়ার্ড এত রোদ্রের মধ্যে কালকে ঘুরেছি না, ভীষণ টায়ার্ড। এখন বাজে 8:30। আমার অটোওয়ালা যে আছে, অটো বাবা, ও এসে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তো লেটস স্টার্ট, আজকে দিনটা শুরু করি। ডে 2 ফ্রম হাম্পি। এই চলছে আমার ব্রেকফাস্ট। আজকে আমি হয়ে গেছি রেডি, এখন আর तो दाढ़ी আছে वो अनेकক্ষণ ধরে। तो चलो चलते हैं, आज पहले जाऊंगी मंदिर, इसीलिए मैं साड़ी पहनी हूँ। बाहर में चली जाती हूँ साड़ी पहन के और मंदिर जाऊंगी ऐसे ड्रेस पहन के। सो पहले मंदिर घर के सामने है। कल आई हूँ, कल सुबह भी नहीं जा पाई हूँ और इवनिंग को भी नहीं जा पाई हूँ, तो इसीलिए मैं फर्स्ट मंदिर ही चलूँगी। उसके बाद आज बाकी जो है 3 और 4 स्पॉट बाकी है, थोड़ा दूरी में है फिर भी मंदिर जाना है। मतलब आज 3, 4 एंड ये 5th स्पॉट मुझे आज घूमना है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया अभी? कौन सा मंदिर में जा रहे हैं? विरूपाक्ष मंदिर। As one descends down towards the north from the Hemkuta hillock, one can reach the eastern entrance of the Virupaksha temple. The Virupaksha or Pampavati temple is the most sacred living temple of Hampi. Old pavilions and structures, some with 2 stories, line the street, offering a glimpse into the past. These open platforms and the pillars are the marks of the Hampi Bazaar in front of Virupaksha temple, which maintained its status as a busy marketplace during the golden days of the Vijayanagara Empire. This bazaar is now home to shops selling souvenirs, local crafts and clothing, as well as some restaurants also here. This market extends over 1 kilometer. White stone pillar pavilions from the past were used by traders who sold pearl and gems, silk and spices. Let's start our journey with most famous Virupaksha temple in Hampi. So welcome back to my channel, to a new and fresh vlog. और मेरे पीछे The Virupaksha temple is recognized as a UNESCO World Heritage Site due to its rich architectural heritage and historical significance. Virupaksha or Pampavati temple is the most sacred living temple of Hampi. And this temple is dedicated to Lord Shiva in his form as Virupaksha, meaning eyes without form. From humble origins as a modest shrine in the 7th century, it blossomed into a magnificent complex under the reign of the Vijayanagara rulers, who added their own touches to the temple, making this structure truly one of a kind. The entire temple complex is within a long rectangular enclosure divided into 2 large courts with imposing towered gateways, that is Gopura. ये उतना अच्छा आएगा भी नहीं और इतना धूप है, धूप भी ज़्यादा है। चलो अंदर जाते हैं, पता नहीं अंदर अलाउ है कि नहीं है वीडियोग्राफी, फिर भी ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पे नंदी जी है गेट पे। This temple is renowned for its impressive architecture, including the 9-storied Gopuram, that is tower, the Ranga Mantapa, which intricate paintings and the use of mathematical concepts in its constructions. Despite historical events, including the destructions of Hampi in 1565, worship in the Virupaksha temple has persisted
making it one of the oldest active temple complexes in India. Due to its vastness, I hired a guide. का परिचय दीजिए। हाँ परिचय कर मेरा नाम सत्यनारायण बाड़ा मैडम। वीडियो मॉडल मेरा नाम सत्यनारायण हम्पी टूरिस्ट गाइड है मैडम। ये हम्पी का स्वागत करता। हम्पी का ये मंदिर है ना विरूपाक्ष टेम्पल है। हर शिवा टेम्पल एक ही बॉडी एक ही नंदी है ना। ये हम्पी में विशेष है, एक ही बॉडी का 3 फेस नंदी। यस, विष्णु महेश्वर का मंदिर का पूजा है, त्रिकाल पूजा का त्रिकाल पूजा का संकेत है। और इसमें जो नंदी जी है इसका तीनों त्रिकाल ज्ञान नंदी। त्रिकाल त्रिकाल नंदी। ओके, ये है भी देखिए कार्तिक जी है, गणेश जी है, मतलब उसका जो सन दुर्गा माँ का है ये सब। और इधर भी नंदी जी है। और ये है आदि शक्ति दुर्गा माता जी के। The complex has numerous subsidiary shrines and pillared mandapa all along the enclosure wall. Some of the important subsidiary shrines are the Mukti Narsimha, Pataleswara, Navadurga, Surya Narayana, Tarokeswara, Saraswati, Vidya Ranya, Parvati and Bhuvaneshwari. एक कल्याण मंडप है। कल्याण मंडप। ये सभा कल्याण मंडप बोलता। Yes. ये है ना अलग मंडप है। हाँ। पला पूजा मंडप वो है। शिव पार्वती का एंगेजमेंट का मंडप। ये है गोपुर है। ये मंदिर का द्वार है ना मेन हाँ, द्वार। हाँ, हाँ। गोपुर बोलता द्वार के लिए। ये द्राविडन आर्किटेक्चर में गोपुर महाद्वार का हाँ। शिखर गर्भगृह था। नागर शैली का टेम्पल में शिखर द्वार था, गोपुर गर्भगृह था। और इसका चारों सेकेंड गोपुर है ना। हाँ, ये हाँ। राय गोपुर। ये है रायगपुर। सेकेंड गोपुर। Okay. और थर्ड गोपुर है ना हाँ, कनकगिरी गोपुर। कनकगिरी गपुर। ये 3 गोपुर है इस कॉम्प्लेक्स में। एक ही कॉम्प्लेक्स में 10 गोपुर है, मतलब 3 गेट है। और ये चपया गोपुर, बिष्टापाया गोपुर सेकंड है, राय गोपुर रायगपुर और कनकगिरी गोपुर। एंड थर्ड है कनकगिरी एंड थर्ड है कनकगिरी गोपुर। तो हम लोग अभी एंट्री करेंगे ना। The temple story is intertwined with the legend of Pampa Devi's penance to win Shiva's love, eventually leading to their divine union and the establishment of the temple. सब अलग अलग मंदिर है। The smaller eastern gateway leads to the inner court with its numerous smaller shrines. Another Gopuram towards north, known as the Kanakgiri Gopura, leads to a small enclosure with subsidiary shrines and eventually to the Tungabhadra river. The Virupaksha temple in Hampi is deeply rooted in mythology and history, with origin traced back to the 7th century CE. It is dedicated to Lord Virupaksha, a form of Shiva, and his consort Pampa Devi. At present, the main temple consists of a sanctum, 3 antechambers, a pillared hall, and an open pillared hall. It is decorated with delicately carved pillars, a pillared cloister entrance gateways, courtyards, smaller shrine, and other structures surround the temple. One of the most striking feature of this temple is the usage of mathematical concepts to build and decorate. The temple has repeated patterns that demonstrate the concept of fractals. The main shape of the temple is triangular. As you look up the temple top, the pattern divide and repeat themselves just like a snowflake. This is the central pillared hall. Krishnadevaraya, one of the famous kings of the Vijayanagara Empire, was a major patron of this temple. Hampi Virupaksha temple ceiling painting are the only surviving example of painting at Hampi, dating from early 16th century CE.
These paintings are found on the ceiling of Maharanga Mantapa, an open assembly hall attached to the main temple facing eastern direction. The painting space is divided into square and rectangular decorative frame. There are various narrations and iconic images. The iconic images such as the Brahma, Shiva, Vishnu with respective consorts are depicted in the initial compositions painted within beautifully framed temple form. The Trinity are shown as seated on pedestal and consorts seated on the left lap of the Trinity. There are also some narratives exhibiting the very interesting acts of Shiva. The Tripura Samhara and Manmatha Vijaya are painted in large rectangular spaces immediately after trinities covering side spaces in square frame in the center of. Then follows a band of composition that has depictions of the Shavatara figure of Vishnu. Further on lower space has the beautiful narration of Shiva's marriage scene, Girija Kalyana. There are also two more marriage scenes on the ceiling, Rama's wedding with Sita and testing of Arjuna's archery talent when he marries Draupadi. Apart from this, the events like Bhagavata stories such as Krishna's Gopika Vastra Apaharana scene also find space on the ceiling. The last but one theme has chariot drawn by the horse, and the last one is the scene of the procession of pontiff. One thing I enjoyed in the temple was the inverted image of the Gopuram. Somewhere towards the back of the temple is a tiny hole in the wall which serves as a pinhole and reflects an inverted image of the Gopuram on the inside wall. Perhaps the first pinhole camera in the world. कितना scientifically 600 year oldest 14th century pinhole camera system, natural camera obscura. ये नेचुरल फोटोकॉपी साइंस है. फर्स्ट है ना उनका इन्वर्टेड इमेज देखने के लिए मिलता है. इन्वर्टेड है नेचुरली पिन होल है. नो इमेज देखने के लिए मिलता है. होल है ये सनराइज टू सनसेट तक ये होल का इमेज देखने के लिए मिलता है. मिडिल इन्वर्टेड. दिस इज इन्वर्टेड इमेज इन हम्पी स्पेशल फोटोकॉपी साइंस. हाँ बस थैंक यू विद्यारण्य गुरुदेव का ये है आश्रम. यहाँ पे इतना खड़ा. There is another mysterious story related to this temple. Is a narrow water channel is drawn from Tungabhadra river which flows along the terrace of the temple and gradually descends to the temple kitchen and finally flows through the outer Prakara enclosure and later join the river Tungabhadra. And this is the Pushkarini inside the Virupaksha temple. It was discovered in 2018. It was measured 10 feet into 20 feet with a depth of 9 feet. This Pushkarani has a water connection channel running north to south. Leaving the history of Virupaksha, it's time to move forward for the next destination, that is the North Hampi. Hippie Island of Hampi is more backpacker friendly with cheap guest houses, hotels, open cafes selling vegan food, lakes to go swimming in, 100 different sunset points to sit and watch the sky change color. And I trust myself for the Hippie Island, and let's explore the Hippie Island with you guys. So stay tuned with my channel.